guys, my name is Paresh Pandya. My YouTube channel name is Paresh Pandya Creative Line. For personal and corporate training, you can contact me on my mobile number, that is 9820779826. You can also follow us on Instagram, that is Paresh Pandya Creative Line, or you can email us on paresh.creativeline@gmail.com. Hi guys, thank you for your love and support for my Excel and Coral tutorials. बहुत सारे students ने मुझे ये भी बताया कि they want to know about Word also and PowerPoint also. So we'll start with Word today. And हम लोग Word का एक अलग playlist में एक section बनाएंगे जिसमें आपको Word के tutorials मिलेंगे, जिसमें आपको with practical assignments आपको सब शॉर्टकट्स कीज और हाउ टू डू प्रॉपर फॉर्मेटिंग वो सब आपको मैं बताऊंगा वर्ड में. सो बेसिकली वर्ड लोग समझते हैं इट इज ओनली फॉर लेटर राइटिंग, लेकिन इसमें हम लोग लेटर राइटिंग, बिल्स, कोटेशंस सब बना सकते हैं. एंड सपोज एक लेटर 50 जन को फटाफट 5-10 मिनट में विद प्रिंट भेजना है, सो हाउ टू डू. सो ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज आपको स्पेसिफाई करूंगा. सो टुडे जनरली पीपल आर uncomfortable with formatting or how to do fast formatting basically. So how to use with shortcut fast formatting. So आज हम लोग वो start करेंगे. So suppose ये मेरे एक कंपनी का नाम है, right? And suppose इसको मुझे फॉर्मेटिंग करना है. सो पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, यानी वो लोग माउस और ये सब यूज करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू शो यू फ्यू ऑफ द शॉर्टकट्स. So if you want to select this line, so अगर आपका कर्सर पीछे है तो shift and home to select, और मे बी सपोज अगर कर्सर आपका आगे है तो shift and end button, right? So to select the proper line, then control B is for bold, control I is for italic, and control U is for underline. Now same way if I want on the मिडल, सो बहुत सारे जन स्पेस यूज करते हैं, उससे स्मार्ट होंगे तो टैब यूज करते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज कंट्रोल ई इज फॉर सेंटर, कंट्रोल आर इज फॉर राइट, एंड कंट्रोल एल इज फॉर लेफ्ट अलाइन, राइट? या गाइस, सो बेसिकली शिफ्ट प्लस होम if you want to select from end to beginning, shift plus end is to select from beginning to end, control B is for bold. अगर आपका Apple या Mac है, so you have to use command plus B or command plus I is for italic, control plus U for underline, control L is for left alignment, control E is for center alignment, control R is for right alignment, and tab is if you want to move your text very fast like this way, right? So guys, with this kind of shortcut keys, you can do your formatting very fast. Thank you.